A person sells two watches for rupee 500 each. On one, he lost 10% and on the other, he gained 10%. Find a net gain or loss. B, net gain or loss percentage. So look here. In this question, selling price of both watches are same. As in the previous example, cost price was same. Here, the selling price of both watches are same. And one is giving you a 10% loss and another is giving you 10% gain. So whenever you have this kind of a question, this kind of a situation, then there is always loss. Correct? There is always loss. Means in nutshell, you will bear the loss in this transaction. Let's see how is it. Let the cost of one watch is C1 and other is C2. So look here, C1 is going to be 500 is selling price giving you 10% profit. So C1 is 500 upon 90 into 100. Is it okay? And C2, another watch, which you are selling at 500 rupees, giving you 10% profit, means 500 rupee is a 110% of the cost price. So cost price 100 by 110. Okay. So this way, it is 5,000 by 9. And this is 5,000 by 11. So the total cost C1 plus C2 is 5,000, take common, and then 1 by 9 plus 1 by 11 means 20 by 99. This is total cost. And the total sale you already know 500, 500 means total sale is 500, 500 is equal to 1,000 rupees. So now to decide whether it is a case of a gain or a loss, as I already told you, find S upon C ratio. What is S? S is 1,000 and cost is 5,000 into 20. 5,000 into 20 and this 99. It is okay. So this is 1, 1, 2, 3. And this is okay. So this is coming 99 by 100. It is less than 1. So it is a case of loss. Okay. Now find loss percent. So very simple. If the ratio is 99 upon 100, so 100 rupees cost, selling price is 99, so loss is 1%. It is okay. So always remember it, if the selling price of two items are same and one is generating 10% profit or X percent profit and another is generating X percent loss, means the magnitude of loss percentage loss and gain percentage is same, the result will always be in a loss. Correct? So now the question is find the net loss also. So now it is very simple. You know, S upon C is 99 upon 100. So here 500, 500, in real scenario, the total sale is given 1,000. Total sale is given 1,000 rupees. And you have to find loss amount. Okay. So 1,000 upon loss amount, suppose it is equal to X. तो loss amount is X. तो ratio क्या हो जाएगा? Here, total sale 99 rupees. And if the cost is 100 and sale is of 99, so there is a loss of 1 rupees. So X is equal to 1,000 upon 99 rupee. It is a loss amount. You got me? So remember it, if the cost price is same, then
If one product is producing you loss and another is producing profit and the magnitude is same, then there is no loss, no profit. But if selling price is same, then resultant will always be in loss. Okay, this loss amount you have calculated. Okay, for further question you can do it directly. How? Very simple. आपको ऐसा करना है कि जो भी मैग्नीट्यूड है, that magnitude is square upon 100%. This is equal to loss percent. So what is here? Minus is here indicating the loss. So it is 10 square upon 100 for 1% loss. Okay. So further, when you have this kind of a question where magnitude is same, one case loss and अदर केस गेन और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा. दैट लॉस परसेंटेज यू कैलकुलेट बाय द स्क्वायर ऑफ दिस बाय 100. ओके, एंड रेस्ट यू कैन डू दिस. सो आप बार बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं. Now see the next question. In next question, a table was sold at a loss of 10%. If it was sold for rupees 70 more, there would have been a gain of 4%. What is the cost price of the table? Look here. A table was sold at a loss of 10%. So means selling price is actually 90% of the cost. Am I right? 10% loss simply suggests that selling price is a 90% of the cost price. If it was sold 70 rupee more, means new selling price in with this condition would be C 90 by 100 plus 70 plus. And there would have been a gain of 4%. So what is this? This is actually the 104% of 104% of the cost price. Is it okay? If this new selling price with a given condition is giving you the 4% profit, so it simply suggests it is a 104% of the cost. So means it is equal to 104% of the cost. So what is the cost price? You can solve it and find it. So 104 by 100, this is equal to 104 minus 90. It is 14% of C is equal to 70. 45 ja C is 500 rupees. I think this point is clear. Remember, loss of 10%, it means it is a 90% of the selling price is a 90% of the cost price. If you add 70 rupee more in a cost price in this selling price, not cost price, if you add 70 rupees more in this selling price, then it gives the profit 4%. It means in new scenario, this selling price is actually the 104% of the cost price. Simply solve it and you are getting the cost is 500. Okay. Now think logically, no need to do all these things. See, in first case, 10% का लॉस हो रहा था. सपोज द कॉस्ट इज C, 10% का लॉस था. एंड विद दिस कंडीशन 4% का गेन हो गया. तो आपको कंसेप्ट तो पता है, कॉस्ट का ही गेन होता है, कॉस्ट का ही 4% गेन है कॉस्ट का. तो ये कॉस्ट का 10% और कॉस्ट का 4%, ये कैसे जनरेट हो रहा है? ये 70 रुपी एक्स्ट्रा हो जाने चाहिए. 70 रुपी ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द 14% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट का 14% is equal to 70 rupees. So answer is directly you can do this 500 rupees. Are you getting me? कॉस्ट का ही तो आप 10% निकालेंगे, आप पीछे चले गए, लॉस हो गया है ना. ये हो गया सेलिंग प्राइस, इसमें 70 रुपी ऐड कर देते हो तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कि 4% प्रॉफिट देती है. 70 रुपी ने क्या गैप मेंटेन कर दिया? 70 रुपी ने ये
10% ऑफ द कॉस्ट और ये 4% ऑफ कॉस्ट, दोनों का ये जो गैप है ये फिल कर दिया। इसका मतलब वास्तव में जो 70 रुपीज है ये कॉस्ट प्राइस की 14% के इक्वल है, तो 500 is the cost of the item. You got me? Now see the next. Now see this question. Gradually, I will increase the difficulty level, right? Now see this question carefully, and better you pause the video and attempt it first, then see the solutions. A man sold an article at a gain of 10%. If he had bought it 10% less and sold it for rupees 6 more, he would have made a profit of 25%. What is cost price of the article? What is the cost price of the articles? So look here. First, see a simple, straightforward approach, simple conventional approach, right? Suppose the cost price of an article is C. And in first case, the man sold an article at a gain of 10%. It means the selling price was actually 110% of the cost price. If he had bought it 10% less, means with a certain condition, he bought it at 10% less. 10% less means the new cost. Actually, it is an imagined cost, not a new cost. So new imagined cost will be 90% of this cost. If he had bought it 10% less, अगर C की जगह 10% सस्ती मिलती तो ये C का 90% होता, and sold it for rupees 6 more, ये जो selling price था इसमें 6 रुपये increase कर, so this new selling price as per given condition will be C into 110 by 100 plus 6 rupees. He would have made a profit of 25%. In this scenario, he would made a profit of 25%. So what is the cost price? You know, gain percentage, gain upon cost into 100. This formula, you know. So look here. Here gain is given 25. Okay. It is given 25. Gain is 25%. And gain means new selling price by 100 plus 6 minus this cost price upon cost is C into 90 by 100 into 100. सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए, आपको C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस एंड दिस is 25 into C into 9 by 10, and here multiplied by this 100. So first it is C into 110 by 100 plus this is like 600 by 100, and this is minus C 90 by 100, and this is 100. ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ये एलसीएम वाला ही पार्ट है, मैंने यहाँ पर ऊपर 100 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके 600 अपॉन 100 लिख दिया है, ये 6। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब दिस 110C माइनस C90 20C हो गया, 20C, एंड दिस इज ये तो कैंसिल हो गया था, हाँ, दिस इज 600, एंड हियर इट इज, आप लिख सकते हैं 25 9 जा 225, 225 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 22.5C. So it is coming to 22.5C minus 20C is 2.5C.
This is equal to 600. So 6 is equal to 6, C is equal to 600 अपॉन 2.5 डेसिमल हटाया, ऊपर ये 10 आ गया, 25, और दिस इज 25, 4 6 24, इट इज 24 इंटू 10 जा 240. So the cost will be 240. This is your answer. Okay. So look here. The cost was C. Then 10% gain means the selling price is 110% of the cost. If he had bought it 10% less, मतलब अगर ये cost 10% से खुद सस्ती मिलती तो cost क्या होती? 90% of this cost. एंड सोल्ड इट ₹6 मोर, जो पुराना वाला सेलिंग प्राइस था उसमें ₹6 बढ़ा के अगर बेच रहे हैं तो उससे 25% का प्रॉफिट हो जा रहा था. तो गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट इन 200. इसको मैंने सॉल्व किया, सी की वैल्यू 240 आ गई. ओके, आई थिंक इट इज अ क्लियर पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन. बट आई हैव अनदर अप्रोच विच इज वेरी इफेक्टिव और जल्दी से आप वर्क कर सकते हो, जो कि आपकी कैट प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है. राइट, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना. लेकिन आप इस चीजों को और जल्दी कर सकते हैं. तो देखिए, केयरफुली देखिएगा और बार बार इसको फिर आप रिपीट करके भी देख सकते हैं. सो लुक हियर, ₹6 सेलिंग प्राइस में इंक्रीज किया था और कॉस्ट प्राइस पूछी थी, ठीक है ना. तो मैं इन दो बातों में एक रेशियो स्टैब्लिश करना चाहता हूं. इसके लिए लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100 and gain 10%. तो selling price was 110. Had he bought it 10% less, उस सिनेरियो में अगर ये 10% लेस होता तो ये क्या होता? ₹90 की कॉस्ट होती. और अब 25% गेन के लिए इस 90 का 25% कितना हुआ? 50% हुआ 45. 25% ₹22.50. यानी 25% प्रॉफिट के लिए इसको 90 प्लस 22.5 इस 112.50 में बेचना चाहिए. इट इज ओके, आर यू गेटिंग मी और नॉट? 112.50 में बेचना चाहिए. तो अभी डिफरेंस कितने का आया? पुराना वाला सेलिंग प्राइस 110 का था. इस कंडीशन के साथ 25% प्रॉफिट जनरेट करने यू वुड हैव टू सेल इट इन 112.50. सो हियर द डिफरेंस इज व्हाट? ओनली ₹2.50. अब आपका काम बन गया. एज पर माई एजम्पशन द कॉस्ट इज ₹100. ओके, सीपी इज ₹100 और इंक्रीज अमाउंट कितना है? इंक्रीज अमाउंट है मेरा ₹2.50. सो रियल सिनेरियो में ये ₹6 था, ठीक है ना. और वहां पर कॉस्ट क्या थी ये आपको फाइंड करना है. तो बस आंसर क्या आ गया, इसको सॉल्व करिए. इट इज कमिंग ₹240. सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड टू डू द फास्टर, और एक्यूरेट भी आप रहेंगे. तो ये आप समझिए, ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. क्या था यहां पे? कॉस्ट सी थी, उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था, और अगर उसकी कॉस्ट 10% सस्ती हो गई और फिर सेलिंग प्राइस में ₹6 इंक्रीज करके उसने बेचा तो उसे 25% का गेन होता है. तो बस मैंने इस कॉस्ट और इस ₹6 के बीच में ये रेशियो एस्टेब्लिश किया है, यानी कॉस्ट प्राइस और ये जो इंक्रीज अमाउंट है. इसके लिए मैंने कॉस्ट प्राइस 100 अज्यूम करी, 10% प्रॉफिट पे, इसका मतलब 110 सेलिंग प्राइस. एंड इफ ही गॉट had he bought it 10% less, so this amount is going to be ₹90. In ₹90 cost, if you want to make a profit 25%, the 25% of 90 is ₹22.50. तो दिस इज इक्वल टू ₹112.50. अब पुरानी वाली सेलिंग प्राइस और इस कंडीशन सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है? ₹2.50 का.
बाकी मैंने सारी कंडीशन को फॉलो किया था, तो रेशियो सेम होना चाहिए। इसका मतलब 100/2.50 विल बी सेम टू द रियल कॉस्ट अपॉन 6 रुपीज इंक्रीज, बिकॉज रियल सिनेरियो में 6 रुपीज बढ़ाया गया था। बस सॉल्व करिए, आंसर आ गया। आई थिंक इट इज अ गुड वन। तो आप इसको रिपीट कर करके देखिएगा और समझिएगा। वेरी हेल्पफुल कैलकुलेशन। नाउ सी द नेक्स्ट। As I said, gradually I will increase the difficulty level. Here, initially, the questions are not questions are, I think so, it's just to give you approach of calculation in profit and loss. But gradually, I will increase the difficulty level. I think it was a good question. It will help you a lot in coming days for the more difficult questions. Now see this. Again, a simple question. A person bought goods for rupees 400, sells half of it at a gain of 5% and 5%. At what gain percent must he sell the remainder so as to gain 20% on the whole? So very simple question, like 400 rupees. Here तो 400 rupees का की गुड्स है उसके पास, उसने हाफ ऑफ इट, यानी हाफ कितना हो गया 200। 200 को उसने 5%, तो गेन कितना हो गया? 200 का 5% गेन हो गया 10 रुपीज। तो 200 रुपए पे 10 रुपीज का गेन हो गया। एट वॉट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना हुआ 200 का? सो एज टू गेन 20% ऑन द होल। तो होल तो 400 था, 400 का 20% कितना होगा 80 रुपीज। मीन्स ओवरऑल यू वांट 80 रुपीज गेन। 10 रुपीज का गेन हो चुका है, 200 रुपए पे 70 रुपए आपको और चाहिए, तभी तो ये हो सकेगा। तो 200 पे 70 क्या हुआ? 200 पे 70, 100 पे 35, यानी आंसर हो गया 35%। ओके। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको इस तरीके से मेंटली कर लेने होंगे। ठीक है, फिर से समझिए। 400 रुपए आधा 200 रुपए, 200 रुपए का 5% गेन 10 रुपए हो गया। अब आपको 200 रुपए का बिजनेस सॉल्व करना है, बट ऑन द होल यू वांट टू गेन 20%। होल कितना था 400, होल अमाउंट 400 का 20% 80 रुपीज होता है। तो अभी तो केवल 10 रुपए का गेन किया है, अब बचाओ बिजनेस कितने का करना है 200 रुपए का। सो फॉर इट मीन ऑन 200 रुपीज यू विल जनरेट 70 रुपीज। So on 200 rupees 70, so 100 it is a 35%. This is your answer. So these are tiny calculations and you should do it verbally.